Hello and Assalamu alaikum. Welcome to CxO Global Forum. As you all know, that CxO Global Forum is a knowledge sharing platform. We bridge organizations into greater exposure within their respective industries. Today we have a very respectable guest who's also one of our member, Mr. Furrukh Ali Baig. Assalamu alaikum, Farooq. Thank you so much for your time. Walaikum Assalam, Sidra. Thanks a lot for giving me an opportunity to be here. थैंक यू अच्छा फारूक सबसे पहले आपसे शुरू करेंगे आपकी जर्नी एजुकेशनल जर्नी एंड आपने क्या पढ़ा कहाँ से पढ़ा एंड देन व्हाट आर यू डूइंग करंटली ठीक है ठीक है, perfect then. So, starting off with the journey, I believe undergrad is the most, the tipping point that I've been into up till now, from the academics perspective. So I did my bachelor's in computer engineering from National University of Science and Technology FAST. वहाँ से ओके तकरीबन somewhere around 2010 में I graduated. Then I went to London, University of Hertfordshire में I did my master's in computer sciences from there. और फिर तकरीबन somewhere around 3 साढ़े 3 साल वहीं पे, I served for an organization there, and then went back to my country to serve, something here in Pakistan. So that is, a quick, academic background that I have. yeah so currently your current position what are you doing you have your own journey of your career वो सब चीजें भी बताएं Chalo, perfect then. So starting off again, connecting the dots. So when I was in London doing my masters, उसके बाद usually जिस तरह लोग जो हैं वो side jobs करते हैं to sustain themselves financially over there. I started off with the same journey. जिस तरह यहाँ पे मेट्रो या मैक्रो है, इस तरह के रिटेल स्टोर्स हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनिक के आइटम भी बेचे जाते हैं, इस तरह वहाँ पे कॉमेट और करीज हुआ करता था. So I started off my sales from retail sales specifically, जहाँ मैं इस floor के ऊपर जो I used to sell tellies, TV बेचा करता था. This is where my sales journey started off from. okay I spent somewhere around like 3 साढ़े 3 साल progressing tremendously over there, and then after 3 years time period I was actually the regional sales manager for Sony in the entire London region. And I had somewhere around like 200 plus employees, sales employees reporting to me. And this is where, I realized that I'm not a database or software engineer guy. I'm more of a salesperson, of a person who is more an extrovert, who loves to connect with people, and who knows कि यार किस तरीके से लोगों की help की जाए with the kind of yeah solutions that you can provide. So that was actually the point of realization. And उससे पहले computer sciences में masters करना है, उससे पहले computer engineering में bachelors करना है, I was more thinking about myself being a techie guy altogether. But वहाँ भी एक realization हुई, and then I came back to Pakistan somewhere around in 2011. 2011 में फिर then I joined a small software house साथ के साथ ही, and I was actually a project manager there, you can say, or a service coordinator, project coordinator, you can say. So starting off very from the very ground level till today. फिर वहाँ से from that software house is called Overload Private Limited, जो कि बड़ी FMCGs को जो है वो digital solutions दे देता on different social media platforms. So we do have multiple kind of small projects coming up, but the load was it was like एक एक वक्त में आपको 40-45 प्रोजेक्ट्स करने होते थे, स्मॉल साइज प्रोजेक्ट्स, बट a lot of pressure there, and I deliver it fully there. उसके बाद I then moved out to TPS, और TPS में then I said कि it's I'm a sales guy and the potential they have realized there also. So TPS में I spent somewhere around 4 years altogether for corporate sales, जिसके अंदर जो स्पेसिफिकली जो पेमेंट्स की डिजिटलाइजेशन है उसके प्रोडक्ट्स को हम डिफरेंट एंड कंज्यूमर्स को दिया करते थे, जिसमें बैंक्स भी आते थे, टेलकोस भी आते थे, फिनटेक्स भी आते थे. सो आज से 7 साल पहले आई यूज्ड टू डू द सेम थिंग, एंड देन 7 साल पहले देयर इज अ स्विस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन या यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन के लिए जिसका नाम है बीपीसी. बीपीसी जो है वो इस वक्त अगर आप पेमेंट्स की डिजिटलाइजेशन में देखें तो वर्ल्ड वाइड या आइदर नंबर 1 या नंबर 2 के ऊपर फॉल करते हैं वर्ल्ड वाइड ग्लोबली. And then they approached me and they said कि why don't you we have seen the potential of the country, we have seen कि पाकिस्तान में जो है वो किस तरीके से जो पेमेंट्स की डिजिटाइजेशन है उसको आगे बढ़ाया जा रहा है और उसका क्या पोटेंशियल है, why don't you join us to make this firm locally recognized and get ourselves into this industry altogether. तो तकरीबन आज से 8 साल के 8 साल पहले I was the first employee of BPC in Pakistan. I started off my work from home. So एक कमरे में 2.5-3 साल तक बैठ के पूरी स्ट्रेटेजाइज करना, फॉर्मलाइज करना किस तरह करना, कस्टमर एंगेजमेंट्स करना,
अगर आप पोटेंशियली देखें मार्केट, सो इट्स वेरी मच लेड बाय द लोकल प्लेयर्स, और उस वक्त फिर एक इंटरनेशनल वेंडर का आना और उसको रिप्रेजेंट करना ऑल अलोन, इट वाज अ वेरी टफ जर्नी। क्योंकि कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि आप किसी बैंक में जाते थे, दे गिव यू सम टाइम फॉर अ मीटिंग, एंड 3-4 घंटे के बाद मुलाकात किए वापस आना, सो दैट वाज अ यूजुअल Hmm. स्टफ. I think Hmm. the hard work pays off, Sidra, in the last 8 years. BPC इस वक्त पाकिस्तान के अंदर it's a very well recognized name in the payment industry now. We have Okay. somewhere around 10 plus customers, जिनको हम Mhm. पूरे ATMs की ड्राइविंग, डेबिट कार्ड्स की फॉर्मुलेशन, ई कॉमर्स की इंजन्स, हम उनको जो है वो इसके साथ साथ कुछ ऐसी हमने प्रोडक्ट्स और ऐसे सॉल्यूशंस दिए जो कि इस मार्केट में अभी तक अवेलेबल ही नहीं थे, Okay. for our banks and for our customers to compete internationally and globally with the other banks. So that's how we are. जो fleet है इस वक्त मेरे पास वो somewhere around there nearby touching to 80 employees now. सारे पाकिस्तान के Mhm. लड़के, we have enabled them. Okay. Not only technically, but unka financially we have enabled them, and we have actually proven ourselves as BPC Pakistan office to be one of the most growth and career oriented company within our organization altogether. तो तकरीबन कुछ Mhm. 22 रीजनल ऑफिसेज हैं जिनके अगेंस्ट बीपीसी पाकिस्तान का ऑफिस भी जो है वो compete कर रहा है, and we are among the number one now. So that shows actually the potential of the people, the potential of the country, and the potential that lies within over here. So this is we have been doing all together, and this is what our agenda is for the couple of next years also, कि हम किस तरीके से इसको आगे लेके जा सकते हैं और किस तरह अपने लोगों को Mhm. enable कर सकते हैं to have that kind of technology जो कि ग्लोबली प्रूवन हो, जो कि ग्लोबली रिकग्नाइज्ड हो, और ना सिर्फ ये कि हम अपने लोगों को ऊपर लेके जाए बल्कि अपनी ऑर्गेनाइजेशंस को भी उस लेवल के ऊपर लेके जाएं कि जहाँ पे वो इजीली compete कर सके और बता सकें कि जी ये फंक्शनैलिटी we are also serving the same to our customers as well. Yeah. So this is how it goes. I mean, this is a very crux of I've been doing. Hmm. Uh, from last 1 year, I'm working as the managing director for BPC Pakistan office. So Okay. in totality, this is where I Mhm. am. Okay, thank you for sharing all the dot and matching the dots. Also, it was really really inspiring. Also, अच्छा Farooq, since you were in your career journey, your तो आपसे सवाल ये है आप inspirations का we all have that one inspiration in life that kept us going somewhere और करियर में भी होती है फिर एजुकेशनल जर्नी में भी हमारी इंस्पिरेशन रहती है तो हम आगे बढ़ते हैं जिंदगी में तो यू हैड योर इंस्पिरेशंस इन योर लाइफ और वो कौन थी या क्या था कोई इंस्पायरिंग पर्सनालिटीज थी I think mostly most of the people they do have similar kind of aspirations, and the aspiration usually comes from your father's side. To be very honest, for me it was like my father, जहाँ से वो where he has started his journey from के रोड के किनारे जो लाइट होती थी उसमें वहाँ से पढ़ना, and then Yeah, doing the yeah, masters back in 1970s, that too in kind yeah. of technology, वो petroleum engineering की तरफ है. So that is अच्छा. an aspiration altogether for me, and the hard work he has done actually to upbring the the quality of life that we were enjoying while initializing our professional Yeah. journey. So that was an aspiration altogether, and then at the same time I think there were a lot of people who had been a helping hand with me in terms of aspiration and in terms of giving me kind of suggestions and kind of aspirations कि यार आप यहाँ से फरो, this is what you are doing right and this is what you are doing wrong. I think Yeah. the best I would say कि keep your hopes high, prepare for the worst for yourself, और साथ ही में be whatever you are at any stage in any stage of life, try to be an humble guy altogether, Okay. regardless of what you are. That has actually helped me a lot when I was not over here, and then when I was when I was very young in my initial career stages. Hmm. कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि 4 4 दिन ऑफिस में रुक के काम किया है. आई नेवर बैक्ड आउट फ्रॉम द हार्ड वर्क. 3 दिन लगे, मैं एक ही प्रपोजल बनाना है, 4 दिन तक एक प्रपोजल बना रहे हैं, बट the work has to get done and it has to be delivered Yeah. at the end of the day. So Hmm. that actually pays me off afterwards. कि आज अगर उस वक्त मैंने 3 दिन 4 दिन काम किया ऑफिस में और मैंने एक प्रपोजल को 20 टाइम्स बनाया और 20 नई फॉर्मेशंस की, so now as of now I know कि 22 फॉर्मेशन उस प्रपोजल की हो सकती है. I know how it will work in different kind of Hmm. situations. So Yeah. be positive, and I think that's what the keep on motivating and pushing you all along your life. So for me, in totality, I think it was my father who has who really helped me out
coming to this बिल्कुल, position. ऑब्वियसली पेरेंट्स ऑलवेज़ द फर्स्ट इंस्पिरेशन आप अपने पेरेंट्स से ही लेते हैं और वो हमारी जर्नी में भी काफ़ी हेल्पफुल होता है। अच्छा, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर इंस्पिरेशंस, बट नाउ वी कैन कम टू द चैलेंजेस जो आपके करियर में आपने फेस किए, एंड व्हाट यू थिंक कि अब की द यंग जनरेशन जो शायद आपको सुन रहे होंगे, ये यूथ जो करियर में आएगी, उनको भी वो चैलेंजेस फेस हो सकते हैं। ठीक, आई थिंक स्टार्ट करें अगर फ्रॉम द एकेडमिक बैकग्राउंड। सो व्हाट आई बिलीव कि जहाँ पे इस वक्त एकेडमिया हमारा मौजूद है और जो प्रैक्टिसेस और जिस तरीके से प्रोफेशनली कंपनीज काम कर रही हैं, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ द एस्पेक्ट्स। आप पढ़ के कुछ और आते हो, जो आप बाय द बुक पढ़ रहे हो तो चीजों को, लेकिन जब आप एक रियल लाइफ में आके रियल लाइफ सिनेरियोस को देख रहे हो तो दे आर टोटली डिफरेंट। That was one of the biggest upset, because होता ये कि आप even when you come to a good organization altogether after graduating from a university, you still remain kind of that person कि नहीं यार 2 + 2 is always 4, but you never thought of कि यार 3 + 1 is also 4. So वो जो gap है between the academia and and the professional life, I think that was one of the biggest challenge that I faced. And I'm really happy कि कुछ universities जो हैं वो they are working on these lines. They are specifically mentoring the programs के वो target audience की या target companies की तरफ या target industries की तरफ किया जा सके। For example, fintech के अंदर कुछ bachelors कराने लगी हैं। I've heard कि जो आपकी इंडस्ट्रियलिस्टिक या मटेरियल इंडस्ट्री है उसके लिए भी स्पेसिफिक कोर्सेज किए जा रहे हैं, बट देयर विल ऑलवेज बी अ डिफरेंस। और उसको आप एल्यूमिनाई के जो आपकी यूनिवर्सिटीज के एल्यूमिनाई उनके साथ कोप अप करके यू नीड टू कम अप विद अ सॉल्यूशन कि जहाँ पे जो ग्रेजुएट्स हैं वो क्या कहते हैं, दे कम टू अ सर्टेन लेवल कि जहाँ पे उनको अंडरस्टैंडिंग हो सके कि प्रोफेशनली किस तरह कंपनीज इंडिया इंडस्ट्रीज काम कर रही हैं। In terms of challenges, I think again जब आप professionally आते हैं तो it's not only about executing the work, but it's also about managing your manager. Number one, number two is managing the organization altogether. कि किस तरीके से क्या हो रहा है, and you should be clever enough to understand कि किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मोल्ड कर रही है या एजाइल हो रही है या चेंज हो रही है, और आपको यू हैव टू चेंज योरसेल्फ आल्सो। मैंने अक्सर देखा है कि लड़के या जो ग्रेजुएट्स हैं या लड़कियां जो ग्रेजुएट्स हैं, दे आर वेरी गुड एट एकेडमिक्स, बट व्हेन इट कम्स टू स्ट्रीट स्मार्टनेस, व्हेन इट कम्स टू द ऑर्गेनाइजेशनल थिंग्स और एजिलिटी दैट इज हैपनिंग, जो पॉलिटिक्स दैट इज हैपनिंग, दे कैन नॉट कोप अप विद दैट इज वन ऑफ द चैलेंज फॉर मी एज वेल। I proudly called myself an honest guy at that time कि मैं तो honest हूँ, मैं तो बिल्कुल सही लेके चल रहा हूँ चीजें, but eventually I realized कि अगर चीजें सही चल रही हैं, that doesn't mean that you will progress. It depends upon how old you are as per the organizational structure and how you cleverly mold up your things to get benefits out of it. And everyone is greedy about their own benefits in their own organization. So I think ये मुझे एक challenge होता है, and I always tell it to everyone that you need to be street smart also. यार go for a good GPA, go for a good academic background, but at the same time you need to be clever enough to understand what is happening and why it is happening. Number two. ये चीज मैंने बहुत इनिशियली हिट करी। इंटरनेशनली ये चीज थोड़ी सी कम है, लेकिन जो पाकिस्तान की चीज है इसमें जरा थोड़ा सा आपको ये ज्यादा चीज फील आता है, बिकॉज it's more of I think challenging organizations over here, क्योंकि बाहर they go with the lean implementation, they go with the flat approval processes, लेकिन पाकिस्तान में थोड़ा सा bureaucratic है, and then you need to understand how things आई थिंक एक चीज ये, दूसरी चीज जो मुझे ज्यादा चैलेंजेस इसके अलावा आए, दैट जो आपके सॉफ्ट स्किल्स होते हैं, उनको सॉफ्ट स्किल्स को इतने ज्यादा तरीके से निखारा नहीं जाता यूनिवर्सिटीज के अंदर। दैट इज built in you either, or number two you learned it the hard way around. ये इस तरह होता है यूजुअली के साथ। और आप यूनिवर्सिटीज के अंदर प्रेजेंटेशंस देते हो, बट आई थिंक उससे ज्यादा फोकस एकेडमिक की तरफ होता है कि आपका पेपर आने वाले ठीक है। यू नीड टू हैव दैट सॉफ्ट स्किल्स, यू नीड टू नो हाउ टू रीड पीपल फेसेस। दो जूम आने बातों का मतलब क्या एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग, क्रॉस वैलिडेशन नीड्स टू बी डन। So ये सारी चीजें वक्त के साथ साथ आपको जो है वो ग्रूम अप करती हैं, and then you eventually get to a certain level of expertise when you say I now understand what is happening and what is not, and that is one of the
the most challenging things for me as a personal human being, to be very honest, because no one taught me about it, and no one tells me about it. मैं तो I was in a view कि यार अच्छा सा पढ़ लिया यहाँ से, लंदन से ग्रेजुएट भी हो गए हैं, हम्म, नौकरी मिल जाएगी और बिल्कुल। I'll be कुछ अरसे में जो है I'll be the master of the man, master of the game, उस तरीके से हम उसको लेके Yeah, जाएंगे. But the things did not shape out this way. You need to have a realization phase, and you need to know yeah. where the tipping points are. Tipping points के टिप होने से पहले पहले you need to change up your strategy कि जी इस यहाँ से हाँ, पहले पहले मैं आपको I need to change my way out. हम्म, So I think this is one of the key challenges that I've been I had faced in my life. But eventually, hard way around, I've learned it how to do it, and now it's all good. It's all good. हम्म, बिकॉज सेल्फ लास्ट लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो कि आप एक सीखें भी। लास्ट हाँ एक लास्ट चीज जो हमेशा से मुझे जो है ना वो मेरे फादर ने भी सिखाई कि हम्म, यू नीड टू बी अ रिस्क टेकर. लड़के हम्म, और लड़कियां इवन इफ दे आर लाइक 20 years in their professional life, हम्म, they don't want to take a risk. यार नौकरी खत्म हो जाएगी तो घर कैसे चलेगा. या हाँ, It's not क्लियर like है। that. हाँ, बिल्कुल, आपने कभी ना कभी अपनी पोजीशन लेनी है और रिस्क लेना है लाइफ के अंदर. बिल्कुल। कंसिडर माई सेल्फ 8 साल पहले बीपीसी जब आया हम्म, पाकिस्तान में, सो आई वाज द हम्म, ओनली वन competing against organization which has 700 plus employees. और मैं बीपीसी को रिप्रेजेंट कर रहा था ग्लोबली. ठीक है हमारी रिप्रेजेंटेशन बहुत स्ट्रांग है, बट इन पाकिस्तान अगर आप बात करें तो आई वाज ऑल अलोन वर्किंग फ्रॉम होम, वर्किंग फ्रॉम माय रूम. सही, बिल्कुल, या दैट टाइम क्योंकि हम्म, अगर मैं उसको रिप्रेजेंट नहीं कर पाता और मैं ये कहता कि जी ठीक है आई फेल्ड समहाउ. या So at the end of the day, it's like you have competed against local players. You have competed, हम्म, you have gone against them. They're not going to hire you again, obviously. But at बिल्कुल, the same time, there is a risk that is associated with the win. So या हम negative पहले सोचते हैं, positive बाद में देखते हैं. So बिल्कुल, calculate the risk. Your risk should be हम्म, calculated. उसको कैलकुलेट हम्म, करो एंड गो फॉर द रिस्क. जिंदगी में रिस्क लोगे तो आगे बढ़ोगे, वरना नहीं आगे बढ़ सकते. एंड हार्ड वर्क ऑलवेज पेज। हार्ड वर्क जो आप करते हैं वो बिल्कुल मिलता All, है। हाँ, I think अच्छा, always तो pays. थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए। लास्ट क्वेश्चन मेरा बस के सीएक्सओ ग्लोबल फोरम के बारे में अगर आप कुछ कहना चाहें। I think it's a great initiative. I have had a lot of engagements. I had a lot of connections being made. Thanks to all you guys. I think you guys are doing a great job altogether. Not only in Pakistan but for the international chapters also. The kind of interaction and the kind of helping hands that I'm getting from you guys, I think it's tremendous. I've been a member of other organizations as well, but believe me, the kind of difference and the kind of interaction and interactivity that I'm getting from here, it's it is actually the difference, or it is the key point that anyone wants from an organization like CxO Global Forum. So I think you guys are on the right track. Nevertheless, इसके साथ साथ ही I think it's been a tremendous journey up till now with you guys, and I think I will have the same kind of journey in the next 5 to 6 years with you Yeah. guys also. यस, थैंक यू फॉर योर टाइम अगेन एंड थैंक यू एवरीवन हु इज वाचिंग। इसी के साथ ही हमारा ये आज का सीएक्सओ लाइव टॉक सेशन खत्म होता है एंड आई होप कि जिन्होंने भी ये सुन रहे होंगे दे मस्ट बी लर्निंग समथिंग आउट ऑफ इट। सो थैंक यू एवरीबॉडी फॉर लिसनिंग टू अस टुडे एंड अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz. Thank you. अल्लाह हाफिज, थैंक यू।